Assalamu alaikum dear aspirants, you welcome to my mentor YouTube channel. Hope you are all fine. I hope your studies must be going good. There has been a beautiful snowfall day before yesterday as well. It's quite cold outside, but I hope students who are preparing for their examinations, their studies must be going good. Today in this video, we'll be discussing JKPSI syllabus for which aspirants have been waiting from a long time. So earlier we were thinking that it will be more or less similar to previous SI syllabus, but there have been definite changes in it. More weightage has been given to reasoning and maths. That means students with mathematical background, especially BTech students, they have an upper edge in this examination. 50% of the syllabus is maths and reasoning, and general studies is very less there. Just 40 marks have been kept for general awareness. So students from humanities background are those who are not that much good in mathematics. They are at a disadvantage, I must say. So those students who are very good in maths, they have an edge here. They should pull their socks up and go for the preparation, rigorous preparation, because they have 50% there where they can fight. They can fight in computer section as well, in English section as well. So BTech students will get a very good score, but they too have to work hard because competition is too much for this examination. So you should give more weightage, more time during your course of preparation for maths, for reasoning, solve n number of questions, work on your maths, work on basic mathematics, watch any good teachers' videos. Don't waste your time on general awareness, general knowledge, because that has less weightage. As much is needed, just go as per your syllabus, follow those lines, and rest of the time devote to your English section, to your reasoning and mathematical aptitude, to your computer section. एंड बहुत फील होता है उन बच्चों का जिनका मैथ्स अच्छा नहीं है, जो पढ़ रहे थे अभी तक, पॉलिटी पढ़ रहे थे, ज्योग्राफी जिनका अच्छा है, जिनका जनरल स्टडीज़ अच्छा है. ऐसा होता रहता है कि सिलेबस जो बनाया है JKSSB ने नहीं, ये डिपार्टमेंट की नीड होती है. दे मस्ट हैव स्टैंड देम द सिलेबस दैट वी नीड दिस सिलेबस देयर, दिस शुड बी द कंटेंट ऑफ अवर एस्पायरेंट्स. सो एज पर दैट JKSSB पब्लिशेस द सिलेबस. सो यू शुड नॉट लूज होप. अगर अभी भी इंसान मेहनत करेगा, ऑनलाइन टीचर्स के वीडियोस देखेगा, प्रैक्टिस करेगा, जिसका मैथ्स अच्छा है प्रैक्टिस नहीं करेगा, ही विल नॉट गेट ए गुड स्कोर. नॉर्मल मैथमेटिक्स है आपका, नॉर्मल बैकग्राउंड है मैथमेटिक्स का, लेकिन मेहनत करोगे, अच्छे से पढ़ोगे, किसी अच्छे टीचर्स के वीडियोस देखोगे और ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व करेंगे. प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स पेपर्स ऑफ JKs, प्रीलिम्स पेपर्स ऑफ IAS एग्जामिनेशन, SSC पेपर्स, SSC लेवल पेपर्स विल हेल्प यू अ लॉट. सो वर्क ऑन योर मैथमेटिक्स. इट्स नॉट rocket science. One cannot learn it. Somebody who has passed his 10th class examination with a good grade, 12th class examination with a good grade, he or she is always capable to fight mathematical questions, because the level is always 10th and 12th class level. So you should not feel we cannot do it, it's very much difficult. It's not like that. Once starts the work, you will start with easy topics. Time will come, you will get interest into it, and your accuracy, your confidence level will increase. सो जो भी बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, प्लीज़ फोकस करो मैथ्स पे. अच्छे से मैथ्स टीचर्स के वीडियोस देखो, और बहुत सारे टीचर्स ने वीडियोस अपने लेक्चर्स जो है फ्रॉम लास्ट 5 years रिकॉर्ड करके रखे हैं डिफरेंट थिंग्स पे. वही अब वो सेल करेंगे SI के लिए. ये बेच है, ये हमारा कोर्स है 300 रुपीज़ में, 400 रुपीज़ में. पहले देखो कंटेंट, वेदर दैट कंटेंट मीट्स योर डिमांड और नॉट. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर वो कंटेंट आपकी डिमांड को मीट कर रहा है तब उसको परचेज़ करना होता है. ऐसे ही आप 200 रुपये में परचेज़ करते हो, फिर कोई वीडियो नहीं इंसान देखता है, तो पहले देखना चाहिए, क्योंकि लोगों ने सेव करके रखा है. उनको अगर 50 रुपये भी मिलेंगे, 100 रुपया भी मिलेगा, वो बोलते हैं कि चलो सही है, ठीक है हमारे लिए. लेकिन बच्चे को होशियार होना चाहिए. स्टूडेंट्स शुड बी वेल अलर्ट एंड स्मार्ट. दे शुड सी वेदर द कंटेंट इज गुड, वेदर इट मीट्स द नीड ऑफ आवर सिलेबस और नॉट. सो आई बिलीव सम people are trying to do justice online like Triple S and others. So do follow them, do watch their videos, because they are wholeheartedly preparing our aspirants for SSB examination, for SSC examination and others. And I hope you will keep fighting, you will keep preparing well. May Allah bless you all. See you in my next video. Till then, take care. Bye. My best wishes are always with all the aspirants. I wish you all good luck. See you in my next video. Till then, take care. Bye. Allah Hafiz.